Hello, dear students. We are dealing with the poem A Legend of the Northland, which is a ballad written by Phoebe Cary. In our previous class, we had discussed stanza number 1 to 8. Okay, and in today's class, we will cover stanza number 9 to 16. In our previous class, we discussed that the small woman was not ready to give a piece of cake to Saint Peter. Okay, then let's see what happens next. Then she took a tiny scrap of dough, tiny means very small, scrap means piece, and rolled it flat. उसको flat करती है and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. She just tries to bake it thinner and thinner. बहुत पतला करती है उसको वेफर की तरह. एक जो वेफर एक it's a kind of chocolate जो बहुत पतला होता है. But she couldn't part with that. फिर भी उस केक को वो उस पीस को सेंट पीटर को नहीं देती है. She didn't give it to Saint Peter because the woman was greedy. She was greedy. She was a greedy woman. वो एक बहुत लालची औरत थी जो अपनी चीजों को बांटना नहीं चाहती थी. She didn't want to share her things. Now let's see the poetic device used by the poet in this stanza. First of all, rhyme scheme, and to identify the rhyme scheme, we see the last word of the line. So here dough, and in next line that is flat, next wafer, and next that. So we start our rhyme scheme with A alphabet. Flat is not rhyming with dough, so it will take B. Wafer is not rhyming with flat and dough, so it will take C. That is rhyming with flat, so it will take B. So the rhyme scheme becomes A, B, C, B. Next poetic device used by the poet is repetition, and that is rolled and rolled. The word has been repeated in order to lay emphasis that on that word, on the action of the rolling. Okay. Now let's move on to next stanza number 10. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself, and yet too large to give away, so she put them on the shelf. Now the woman said, my cakes that seem too small. कहते हैं कि जो जब वो खुद से केक खाती है, when she eats them on her own, तो उसको बहुत छोटे लगते हैं. And yet too large to give away. लेकिन जैसे ही उसे किसी को देने की बारी आती है, वो उसको बिग लगने लगते हैं. Yet too large to give away, मतलब give away means किसी को देना, to give someone. जब वो किसी को देना चाहती तो उसको वो केक बहुत बड़े लगते हैं. यह कह के उसने so she put them on the shelf, वो उनको एक जो केक्स रखने की जो शेल्फ होती है उसमें रख देती है. Now let's see the poetic device. Small, myself. We are just looking rhyme scheme. Away, self. Small will take A, myself, B, away, C, and shelf, B. Again the rhyme scheme is A, B, C, B. Okay. Next poetic device used by the poet is here alliteration. Okay, alliteration means when the consonant sound in the beginning of two or more consecutive words is repeated, the poetic device becomes alliteration. Here you can see here, so, she. The consonant sound so has been repeated. It means the poet has used the poetic device alliteration here. Let's move on to next stanza, stanza number 11. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke means cause to get angry, to make someone angry. Now the poet says that the disciple, Saint Peter, disciple of Jesus Christ, he became angry, for he was hungry and faint. Because he was hungry, he had eaten nothing for a few days, and faint means he was becoming weaker. And surely such a woman, और इस तरह की वुमन जो उसको केक नहीं देना चाहती थी, was enough to provoke a saint. एक सेंट का, एक रिलीजियस मैन का गुस्सा बढ़ाने के लिए वो वुमन काफी थी. Dear students, the poetic device rhyme scheme is same here. You can do it on your own by recognizing the last word of the line. Okay. So let's move on to next stanza. Stanza number 12. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm.
He says that you are too selfish, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो. कौन कहता है? सेंट पीटर. To dwell in a human form. Dwell means to live. Means you are living in a human form. Still you are selfish. To have both food and shelter and fire to keep you warm. Though you have both, तुम्हारे पास दोनों हैं, खाना भी है और शेल्टर भी है, घर भी है रहने के लिए, और इवन फायर भी है, आग भी है अपने आप को गर्म रखने के लिए ड्यूरिंग विंटर डेज. So dear students, again the poetic device is A, B, C, B, right? So let's move on to next stanza. Stanza number 13. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Now here when Saint Peter became angry, he cursed the woman and said, You shall build as the birds do, एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड. मतलब अब तुम जैसे बर्ड्स करती हैं वैसे ही करोगी. विल गेट योर स्कैंटी मीन्स दैट लिटिल फूड. अपने थोड़े से खाने के लिए भी तुम्हें क्या करना होगा? बोरिंग का काम करना होगा. बोरिंग मीन्स टू डिग, यानी कि तुमको डिग करना होगा जरा सा खाना पाने के लिए. ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. और कहाँ पे? हार्ड, जो बिल्कुल हार्ड वुड हो, सूखी लकड़ी हो, उसमें तुम जरा जरा होल करके अपना खाना पाओगी. ओके, इट मीन्स सेंट पीटर grew angry and he cursed the woman. So dear students, rhyme scheme is same as stanza number 12, A, B, C, B. Next stanza. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. उसके बाद जब सेंट पीटर उसको कर्स करते हैं, शी वेंट थ्रू द चिमनी, जो उसके घर की चिमनी थी जहाँ पे वो बेक्स को केक्स को बेक कर रही थी, उस चिमनी के रास्ते ऊपर जाती है. नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड शी नेवर अटर्ड अ वर्ड. उसने एक भी शब्द नहीं बोला. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर. और जब टॉप में चिमनी से बाहर निकलती हैं तो वहां पे वो एक क्या बन जाती हैं? वुडपेकर. फॉर शी चेंज टू अ बर्ड बिकॉज she was changed into a bird by the curse of Saint Peter. Okay, dear students, here the rhyme scheme is same, A, B, C, B, right? Let's move on to next stanza, stanza number 15. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. Scarlet means brilliant red color. शी हैड, अब उनके जो हेड था उस पर एक लाल रंग की टोपी बन जाती है, लाइक अ वुडपेकर हैज, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम. और वो हमेशा वैसी रहता है. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न. सिर्फ उसकी टोपी लाल रंग की रहती है सिर पे, बाकी उसका पूरा बॉडी जल जाता है. एंड बिकम्स ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. और जैसा कोयला आग में जलने के बाद कोयला बन जाता है, उसी तरह से उसकी होल बॉडी हो गई थी. तो चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि जो वुडपेकर होता है उसकी बॉडी ब्लैक होती है, जबकि उसका जो हेड होता है वो रेड कलर का होता है. ओके, सो लेट्स सी द पोएटिक डिवाइस. राइम स्कीम इज सेम, A, B, C, B. ओके, and here the poet has used the poetic device simile by comparing the clothes of the burning of the clothes of the lady to a coal, with a coal. कोयला के साथ में उसके जो जले हुए कपड़े थे उनकी कंपैरिजन करके पोइट ने यहाँ पे सिमली यूज की है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेंजा, द लास्ट वन. And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. Now the poet says that and every country school boy, मतलब वहाँ पे जितने भी कंट्री, जितने भी गांव के जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उन्होंने उसको देखा था जंगल में. इन द वुड मीन्स इन द फॉरेस्ट, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पे वो पेड़ों पे रहती है. टिल दिस वेरी डे. टिल दिस वेरी डे मीन्स टिल प्रेजेंट. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. और वहाँ पे वो क्या करती है? डिग करती है. किसके लिए? अपने स्केंटी फूड को पाने के लिए. Now dear students, that's all for the poem A Legend of the Northland. Thank you.